नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के सत्संग जूम मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का क्रमशः अध्ययन करते जा रहे हैं। तो पहले भी पूरा हमने कर लिया है, परंतु अब हम जो श्लोक ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करते जा रहे हैं। तो हम लोग चैप्टर 8 एंड श्लोक नंबर 16 पर आ गए हैं। आज हमारे आचार्य यतीन्द्र जी कुछ कामवश थोड़ी सी देर से आएंगे, तब तक मैं शुरू करता हूं इस प्रकरण को। तो इस चैप्टर में भगवान बता रहे हैं कि ये लाइफ एंड डेथ का जो साइकिल है सबके लिए बना हुआ है। जो भी इस सृष्टि के कपाट बने हुए हैं, तो उसमें से कैसे उभरना है, कैसे निकलना है। बिकॉज दैट सीम्स टू बी the only goal, only viable goal for a person who has been born in the human form. So पहले उन्होंने कई उपाय इसके बता दिए, कई तरीके बता दिए हैं भगवान ने कि क्या क्या करो क्या नहीं करो। कि कहते हैं after being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable Om, the supreme combination of letters, if one thinks of Supreme Personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets. फिर कह रहे हैं for one who always remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. और फिर कह रहे हैं after attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. So अब हम श्लोक नंबर 16 पे आ गए हैं, 16th श्लोक। असल में जी मैंने करीब लास्ट एक हफ्ते से एक हमारे बहुत नजदीक के रिश्तेदार थे, उन्होंने डेथ के ऊपर खूब लिखा है। तो उनके जो प्रकरण बड़े सुंदर है, क्योंकि डेथ को लोग फियर करते हैं, बट इट्स टू नॉट बी फियर्ड, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये जो अपना आवागमन का वो चलता रहता है। कोई भी ऐसा सृष्टि के न ब्रह्मा से लेकर कोई ऐसा नहीं है जो कि इससे अलग हो सकता है। तो मैंने पहला बताया है कि देखो सबसे बड़ी इसको डोंट टेक एज ए हॉरर, टेक एज ए वेरी सिंपल थिंग, एंड उसमें विलीन होना बहुत अच्छा है। बात है जैसे जीर्ण बुद्धि हो, जीर्ण शरीर हो जाता है तो जीवात्मा नहीं रहना चाहता उसके, दे नीड ए न्यू लाइफ। तो उस न्यू लाइफ के अंदर उनको आगे अग्रसर होने का समय मिलता है, तो उसको कभी भी नहीं करना चाहिए। उसके कई उपाय हैं। वो सबसे बड़ा उपाय यह है कि जितना आपको हो सके तो विषयों से दूर रहो और भगवान का इस्तेमाल करते रहो क्षण भर, और जितना भी हो सके उतना करो, बट डोंट प्रिपेयर योर पुश योरसेल्फ, जितना हो आनंद पूर्वक करो, और ऐसा नहीं कि बोझ आ गया। तो जब आपका माइक ऑफ है? सुरेंद्र जी कुछ कहने लगे थे जी। आपने कुछ कहा था ना वैष्णवों को, यू यूज द वर्ड सब वैष्णवों से परे रहो, ऐसा कुछ नहीं, विषयों से माय फॉरगिव मी, आई गॉट इट रॉन्ग। नो, विषयों से परे रहो। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर विषयों में आपकी अगर आपकी बुद्धि है तो सोचिए कि विषय कुछ रहेंगे नहीं, जो कुछ है यही रह जाएगा। सब में देखा है हमने कि बड़े बड़े अलेक्जेंडर दुनिया भर के जो होते सब खत्म हो गए। और तो मरना एक चीज बुरी नहीं है। और आजकल मैंने मेरे पास वीडियो आया जो यतीन्द्र भेजा था, मैं उसका रोज मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसमें लिखा है कि डोंट फियर,
जस्ट अपनी बुद्धि को भगवान लगाओ और मानो देखो ये सब चीज बड़ी क्षणिक है और किसका कब हो जाए कोई नहीं जानता है। तो उसको कहा कि जो मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं मर जाते हैं तो उनका ये है कि उनको क्षणिक था और उनको दे हैव अनदर लाइफ टू प्रोसीड। और उसी प्रकार हर आयु के अंदर लोगों के अलग अलग होते हैं और उनमें चले जाते हैं। तो जीवन शरीर को रिन्यू करने के लिए ये बहुत बड़ा उपाय है। और योगी लोग जैसे कि गीता के 8वें अध्याय में आया है कि जो गीता के जो योगी होते हैं उनको परम धाम मिल जाता है, पर जिनके जो योगी जो योगा भ्रष्ट हो जाते हैं उनको दूसरा जन्म लेना पड़ता है और उस जन्म में वो ऐसे परिवार में उत्पन्न होते हैं कि जहाँ उनको सुविधा मिलती है। जैसे आपने बहुत से महात्मा को देखा है और उसमें बुद्धि उनकी हो जाती है और उसको पाकर वो फिट कर जाते हैं। तो डेथ को it should not be think as a burden, it should be a release of the soul to a better life, क्योंकि आपके जो पुण्य हैं वो कभी खत्म नहीं होते हैं, बड़े संग्रह में रहते हैं और जो पाप है वो भी थोड़े रहते हैं। तो जब आपका पुण्य का बढ़ जाएंगे तो आप धीरे धीरे प्रगति करेंगे। और ऐसी बात समझ चाहिए कि ब्रह्मा को भी दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो ये बात मैंने करीब I wish I could transmit this whole book to somebody, but it is such a gem. And he was a retired IAS officer, and then he has angina, so he came to his Canada with his 2 sons, and so in fact इसने angina के मारे वो कुछ कर सकते नहीं थे। तो उन्होंने ये देखा कि सबसे बड़ा चीज है कि भगवत प्रार्थना। और उनके बड़े गुरु थे शिवानंद स्वामी जो वहाँ के थे, और एक जो ऋषिकेश के जो स्वामी जी थे वो भी उनके गुरु थे। तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा और धीरे धीरे लिखना शुरू किया और बहुत ही प्यार से और समझा के लिखा है। तो मैंने देखा किनकी बात आप बता रहे थे अब जी? किसकी बात बता रहे थे आप अभी? मैं यहाँ पर हमें ये रामेश्वर भार्गव थे और ओटावा में। तो he came after retiring from IAS with his 2 sons and they live in Ottawa। और उनके जो बच्चे बहुत देवर भगवत था उन्होंने उनके जो दुहिता है उसको उनकी किताब को लिखा उनके बाद जाने में। और तो it is such a practical book, there's no doubt about it, but in spite of angina बहुत दर्द होता था तो उसको उन्होंने उसको भूलने के लिए ये किताब लिखी। चलिए अच्छा है आपने बता दिया। तो yeah, I mean fear of death shouldn't be with us any time, but everybody feels that कि भी पूरी लाइफ जी के ही वो टाइम आ जाए, पर कईयों का पहले आ जाता है, कईयों का उससे भी पहले आ जाता है। वो कोई पता नहीं होता कि क्या विधि के लेख में है कि किसका टाइम कब आना है, पर किसी न किसी वजह से उनका टाइम आ जाता है। अच्छा एक बात है, एक बात उन्होंने कहा है देखो कि जब आपको क्लेश होता है ना, दुख होता है, बॉडी में गिरती है, तो उस समय ध्यान देना चाहिए कि ये प्रारब्ध है और ये बीत जाएगा। तो डोंट बजाय उस पर डिपेंड करने के लिए अगर आप भगवान की ओर जाएं तो वो दर्द भी कम होएगा। और यू आर एबल टू फिनिश दैट फेज सिंपली एंड स्मूथली। इसीलिए तो हम लोग लगातार भगवान के स्मरण में ही करते ही रहते हैं भगवत गीता एवरी वीक। जितना करें उतना कम है, उतना कम ही है, वो ज्यादा नहीं है, करते रहना चाहिए। चलिए तो हम लोग 16वां श्लोक उसका उच्चारण करते हैं और फिर इसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। मेरा ख्याल इसका मुझे परपोर्ट भी पढ़ना पड़ेगा अगर आप लोग चाहें तो, बिकॉज इसके इन श्लोकों के बाद क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्यों भगवान का लोक क्यों है, तो और कहाँ है। तो 16वां श्लोक नंबर 16। आब्रहम भुवन्नालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।
from the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery, wherein repeated birth and death take place. But one who attains to my abode, O son of Kunti, never takes birth again. So यहाँ पर उन्होंने अपने अबोर्ड के बारे में बताया है. So क्वेश्चन होगा कि भी अबोर्ड उनका कैसे डिफरेंट है, कौन सा अबोर्ड है, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, व्हाई इज इट इज इम्पोर्टेंट. सो यहाँ पर थोड़ा सा वो बता रहे हैं प्रभुपाद जी, इसमें बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ. ऑल काइंड्स ऑफ योगीज, कर्म, ज्ञान, हठ एटसेट्रा eventually have to attain devotional perfection in bhakti yoga or Krishna consciousness before they can go to Krishna's transcendental abode and never return. Those who attain the highest material planets, the planets of the demigods, are again subjected to repeated birth and death. As persons on earth are elevated to higher planets, people on higher planets such as Brahmalok, Chandralok, and Indralok fall down to earth. The practice of sacrifice called Panchagni Vidya, recommended in the Chandogya Upanishad, enables one to achieve Brahmaloka. But if on Brahmaloka one does not cultivate Krishna consciousness, then he must return to earth. Those who progress in Krishna consciousness on the higher planets are gradually elevated to higher and higher planets, and at the time of universal devastation are transferred to the eternal spiritual kingdom. Sridhara Swami, in his commentary on Bhagavad Gita, quotes this verse, where there is devastation in this material universe, Brahma and his devotees who are constantly engaged in Krishna consciousness are all transferred to the spiritual universe and to specific spiritual planets according to their desires. असल में एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी उपनिषद को पढ़ना दोबारा शुरू कर दिया है. अब पढ़ने में उतना अच्छा लगता है कि मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूँ तो समझ में आता है. तो एक तो ओंकार के पूरा है, सब जानते हैं ओम के ऊपर. दूसरे में पूरा यही इसी के बारे में पुनरावृत्ति के बारे में कि पुनरावृत्ति में ये जो सब कुछ बताया वो ठीक है, पर ये पुनरावृत्ति भी छूटने के बहुत उपाय बनाए. करीब उन्होंने चाहे 3 उसमें कई बदलियां हैं. बदलियां मीन्स चैप्टर आफ्टर चैप्टर्स. तो हैव डिस्क्राइब कि पहले ब्रह्म का स्वरूप जानना चाहिए, ब्रह्म क्या है, और ब्रह्म के अंदर मैंने साथ साथ ब्रह्म सूत्र पढ़ना शुरू कर दिया. तो ब्रह्म सूत्र के अंदर सारे सूत्र हैं लाइक पातंजलि के. तो उस सूत्रों में एक शब्द आया, जो वन वर्ड. तो उसका जो वन वर्ड का जो है उसका वो विरोध करते हैं कि दिस नॉनसेंस. बट देन द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कि हाउ इज इट. तो पहला उसको हटाने के लिए तो उसके बाद धीरे धीरे प्रगति होते होते देन दे टेक टू दी अपर लिमिट. और बताया है कि जो सारा विश्व नष्ट होने के बाद एक तत्व वो हमेशा रहता है. उस तत्व के अंदर जिसको महातत्व कुछ भी कर लो, परमात्मा कर लो, तो उससे वो सब ले जा होता है. फिर बाद में सब के सब वहीं से उत्पन्न होती है. तो दैट इज द ओनली थिंग. एंड देन माया लीला शुरू होती है. या महत तत्व का. या किसी को और कुछ ऐड करना है या क्वेश्चन या कुछ, या आगे चलें? क्वेश्चन. हाँ, यस. I've been attending quite a few funerals and messages and so on. When we achieve Krishna consciousness, and when we bless the soul of the departed, we always say we hope the soul reaches and gains moksha. Yeah. What does that mean? मैं बताऊं मुझे मोक्षा के बारे में. देखिए
इसे सब बहुत से तो जो योगी होते हैं वो मोक्ष नहीं चाहते हैं, क्योंकि मोक्ष के अंदर उनको they need some kind of a thing in which they can link to it, they can depend on it. Moksha is very abstract thing, so they want to avoid. But जो जिनको कुछ सारा, they have fed up with the body, fed up with all this world, they मोक्ष वो भ्रमलीन हो जाते हैं, they become absorbed in that परमार्थ, by absorb हो जाते हैं by the Almighty. Meaning Yeah, that but goes and settles with the Almighty. yeah, your question was when we as a Krishna conscious person, if we bless someone at their time of departure or when they departed, does that help them reach the stage of moksha? Yes and no, because moksha is something that we work for during our life ourselves. It's Right. our responsibility, not somebody else's. But you might differ, even Surendraji might differ with that, because he knows the power of Guru, and Guru, if Guru is there, like really Krishna conscious person, Guru is supposed to be, and if he or she is present there and they say, yes, within the power within me, I give you a little push, you're gonna be going towards moksha. Guru is a living, liberated person, living. The true Guru, that is, who has that capability of being self-realized, person, nothing to do with any material, is above all Material those things. and above the gunas and all those things. That is the real Guru. And we discussed about this subject a lot of times, and Yatindra ji also said lots of times. So I think and then there are a whole bunch of other things involved in it, karmas, and then sanskaras, and what is going to happen to those. So people are bound by so many things. I'm talking about the individual jivatmas are bound by so many things like karma and those things. So it is helpful. It's complicated. It is helpful. It is complicated, but it is helpful if somebody sincerely prays for them. It soothes their way. That is understood to be the case by a whole bunch of people, not only Hindus, Christians, Muslims, you name it, everybody, they Right. believe it soothes the way for the soul, for the departed soul. And Right. it is good. That's why people pray at that time. And they also kind of see it that their time is also coming, because nobody is permanently here, Right. in this body. So they're gonna have to be released from the body. So they hope somebody else is going to pray for them, because once you are out of the body, you don't have that capability, but somebody who is in the body, they have the capability, like we have right now. We can just sit here and chant Hare Krishna, or whatever mantra, pray in silently, whatever, we can do that. But in that stage, when released from the body, the capabilities are different than this. So that's the way I understood. सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, खुद करना पड़ेगा, हाँ जी, आपको खाना खुद खाना पड़ेगा, मेडिसिन खुद खानी पड़ेगी. yeah, There is nobody, they can give you a little boost, yeah, but that boost is not enough. आपको सतत प्रयत्न करना पड़ेगा, और पता नहीं कितनी जिंदगी, कितनी लाइफ में जानने के बाद वो स्थिति आएगी जब आप उसके पात्र बनेंगे. जैसे अर्जुन को पात्र बना था, तब भगवान ने उसको गीता का उपदेश किया था. बिना पात्र बने वो जब तक कि निर्मल हर तरह नहीं होगा, तब वासना तब तक खत्म नहीं होंगी, जब तक कि पूरा सद्गुण से
पूरा जीवन भर नहीं जाएगा तब तक वो स्टेज आना बहुत डिफिकल्ट है। पर हम लोग जो काम करना है वो स्टेज को धीरे धीरे शनै शनै जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। Two things, if I may. या आप जो liberation की बात कर रहे हैं ना, forgive me the way I'm going to say, it's very simplistic. This is our way, because you love the person, you wish that, because that's the ultimate. This is how we do, at least that's what I think I do. Just say, may God liberate this soul. Now, what is liberation? Now, that's a big question, all right? To me, liberation is freedom from this earthly living, senses, because physical body has got a lot of gravity, anger, like, and so, love, and so on. When you're talking about planting a seed, for instance, I mean, I can relate to myself. मेरे गुरु ने मुझ में बीज डाला है, ठीक है, कि तू सुरेंद्र ये जो है जपा कर, ऐसे कर। तो जो बीज एक दफा डाल दिया है, उसकी अगर देखभाल करो, it will flourish no matter which way you look at it. Yeah, I love this word बीज, very nice. जो बीज है ना, उसको what is, I mean, I'm not detached myself about anger and all that, but the fact is there is something that flourishing within me. I don't have any control on that. It is the grace. By the grace, guru does not mean physical guru as only, all right? So it's not that. It's a guru is within ourselves, and the physical guru who's already been there, he so initiates you and ignites your Shakti so you can progress. And so I am progressing at my own pace. And the challenge is still there. So when you come to liberation, I ask for every day, please God liberate me from Lord. But it is the gravity of life, senses. I like J, I like Om Ji. I hate this person. You know what I'm saying? There's a lot of senses. Dualities. Yeah, dualities. And I mean, I run into it every day. The point so it is that you're free not to be born again, period. It is hard to get over the duality. But that's the best I can understand. And I don't believe I'll be coming back, but I don't know. असल में सबसे बड़ी एक बात है, ये कुछ कह रहे हैं, जय जी कुछ बोल रहे हैं। जय जी कुछ कहने वाले थे। बाद में अध्याय के जो से लेकर 19 तक के श्लोक हैं, उनको सारा आ गया, सारा गीता का सार उनमें ही है। गुणातीत, एवरीथिंग इज देयर। तो आप उसको अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकार समदुःखा सुखामि यत् यत् एक्सेट्रा। तो वो इसलिए इतने अच्छे आज 8 श्लोक हैं कि उनको आप हृदयंगम करें और सोचें कि देखो इनके बिना मेरा गुजारा नहीं है और इन पे मुझे काम करना है। I have to do my all my energies to sort of to do what they say. Yeah. जय जी कुछ कहने लगे थे। It came very interesting, this last funeral service, where the explanation was that this particular individual, the priest said, we are praying that her soul doesn't, we normally say reincarnation, but we want this particular soul because of all the things that she did. She was a priest by training, and she was from it's one group of Hindus in the world, and they blessed her to go and be next to the Almighty. That's the end. So that was the explanation. That's where I was coming from. So when we say we reach moksha, we want the soul to reach moksha, the explanation was the soul to go and be with the Almighty. Don't come back to this material world. Don't come back to do more, whatever problems you have and whatever, feelings and tastes and all that. So that's where I was coming from, because I've been listening to this so many in the last 2 years that I question myself, am I ready to go there? Do I want to come back to earth? Yeah, and that's what this book is saying. It's saying clearly, you have to decide yourself. Yeah, and also whether it's in the cards or not, it
it depends on a lot of your past karmas as well, and how it pans out, it will be found out at the end, you know. Correct, correct. Nobody can tell anything, because there are personalities who's been doing a lot of bad things, and like Ajamil, for example, that's one example from Kathas, that he got an opportunity to be elevated to the higher planets, like, you know, Vaikuntha Loka. And whereas other people who are in that sort of category, they don't have a chance. No matter how much you pray for them, they don't Right. have a chance. But the guy called out for Narayan, his son, at the end, and Narayan is the name of the Lord of Vaikuntha. So suddenly, you know, I don't think it's going to happen for every Tom, Dick, and Harry, you know, that you remember, okay, let me do all kinds of bad stuff, and I will remember to say Narayan at the last moment, and the Garuda will come and take me to Vaikuntha Loka. So I have one over here, and I have one over there. No, Narayan has some tricks in his hands too, and he can play those tricks, and you will not remember anything about no Narayan, nothing. So you end up getting your dues, you know. दीपक जी, मेरे पास Thank you. इसके अंदर I have one explanation. देखिए, उसने अजामिल ने उसके जो पूर्व कर्म थे वो बहुत बड़े होंगे, और वो योग भ्रष्ट हो गया हुआ और गिर पड़ा, तो उसको एक भगवान ने एक Second chance प्रदान कर दे, तो that is the way. Otherwise he has to go all through the process. Yeah. He cannot get it. It is a Yeah. process which takes you there. Yeah, sahi baat hai. That's why the book of that story that Prabhupada wrote, it's called The Second Chance. So the guy got a second chance. The whole book, this big book is. Yes, Surinder ji, kuch keh rahe? If with your indulgence, I like to, you know, when you said liberated, what is liberation? Like I believe my guru is liberated. Now, it's a state, you've gone beyond rebirth, but they have a infinite power to, because in the scene, the living on the earth is fairly difficult, very difficult. So out of their compassion, like Sai Baba, Muktanand, unke guru, I mean, I can go, itne Sant Mahatma hain, I mean, Gyaneshwar Maharaj. And so the point I'm making to you, in their own compassion, they help. And they have the ability to, without physical body, they can travel and keep guiding people, the guidance I'm talking about. Each of us know, you're from Bengal, you know Ramakrishna Paramahansa. I mean, if you look around, there are a lot of great beings who came, and after they don't come physically, they're gone, but their grace, which is only one grace in the world, this is the God's grace. Yes. It's not different there, but no different. They have the ability to be able to transmit freely. And that's, I mean, that's sort of, if you ask me, do you experience that? I have a marginal experience, but I believe in that because I've heard so much from various stories. So keep that in mind, that the very fact you're asking this question is something happening within yourself, asking you to check it out. That's why you're asking this question. So grace is all around it for you to really take a big leap. What the leap is, I have no idea. I know what is for me. So the guidance does come. I just wanted to emphasize that. Yeah, and there is a lot going behind the scenes that we can't see, and it will it can benefit us, you know, in Guru's kripa or somebody is praying for us. कि जो आप जो ये पूरा उपनिषद पढ़ते हैं, ब्रह्मसूत्र पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, they sort of reinforce slowly and slowly. Beginning में, depending on your ability to comprehend, they are slow, but जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना उसमें समय लगाएंगे, उतना आपको थोड़ा सा और
विषयों से विरक्ति होगी। ठीक है, चलिए हम लोग भगवत गीता श्लोक नंबर 16 रीड कर चुके हैं. नाउ वी गोना बी रीडिंग श्लोक नंबर 17 of chapter 8. So सहस्र युग पर्यंत महत्य ब्राह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेय होरात्र विदो जनः. By human calculation, 1,000 ages taken together form the duration of Brahma's one day, and such also is the duration of his night. So in this one, if anybody wants to read the purport, it's a little longer. There's a lot of calculations given in here, and those all come from like bona fide authentic literature that was written by the same writer, Vyasadeva ji. You know, the cycle of Satya is characterized by virtue, wisdom, and religion. There being practical, no ignorance and vice, and the yuga lasts 1,728,000 years. In the Treta Yuga, vice is introduced, and this yuga lasts 1,296,000 years. In the Dwapar Yuga, there is an even greater decline in virtue and religion, vice increasing, and this yuga lasts 864,000 years. And finally, in Kali Yuga, the yuga we have now been experiencing over the past more than 5,000 years, there is an abundance of strife, ignorance, irreligion, and vice, true virtue being practically non-existent, and this yuga lasts 432 years. So this is how it's been explained, that the time scale of this, you know, and it goes on. So the Brahma's year, they have said here, these 4 yugas rotating 1,000 times comprise one day of Brahma, and the same number comprise the night. Brahma lives 100 of such years and then dies. These 100 years by earth calculation total to 311 trillion and 40 billion earth years. Incomprehensible. Deepak ji, this has been confirmed by the scientists, because this is the time when the, what you call again to them, the what you call the whole thing bursts, you know, and then new thing. Scientists are talking about around 40 billion years old, this earth, you know. But I mean, they're all approximate, you know, who knows exactly. Yeah, they're still kind of work in progress, always. It is 11.5 billion years. Yeah, so 311 trillion and then 40 billion on top of it, earth years. That's Brahma's cycle, you know. So that's what has been written here, you know. And these writers, they do their research from the Vedas, Upanishads, and everywhere, and then they write it, because these books are the syllabus in the universities around the world. So I know this Bhagavad Gita, as it is syllabus in many universities around the world. Yeah, who teach this subject. Deepak ji, you just read. हाँ जी, ये किसकी, भक्ति वेदांता की है? हाँ जी, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की है. I'm only surprised at one thing. He's using the word religion. Maybe he was writing for white people, so he used the word religion. Yeah, that's right. उसके पास और तो कोई तरीका है नहीं उसको समझाने का. Besides, he came from the same flock of people
who were raised during the British times, so वैसी English. और अगर इनके गुरु की English आप पढ़ लें ना, there is one book only where his guru's English is there. You can hardly even understand that guy is इतनी ज्यादा क्लिष्ट, जैसे बोलते हैं ना ओम जी के, क्लिष्ट डिफिकल्ट इंग्लिश लिखी, इतने तो बड़े बड़े वर्ड इंग्लिश के, पता नहीं कहां से पढ़ के आए थे उनके गुरु, बट वेरी लर्नेड गाय. Brahma Samhita is the only book that is available, translation exactly as the Guru put in English. And Prabhupada ji said to his disciples, please do not change my Guru's translation of this book. Even I cannot translate this book the way he translated, because I'm gonna just mess up with the meaning of the subject that he is explaining. So leave it as it is and read it over and over to understand if you have to. I cannot simplify it. So that's the only book I know about. I have read this. You have it, this book? हाँ जी, ब्रह्म संहिता छोटी सी है, यहीं पर पड़ी होगी. I want to buy this book. Yeah, I read Satyarth Prakash, in English. So it's a very strange English. It's hard. You cannot continue. It's so. Yeah. I like flowery English. Oh, you like flowery? Okay. No, it's not. I'm not. That's okay. I'm saying it's just I mean, I don't know. I mean, yeah, समझ में नहीं ना आती वो हम लोग के old English है. Yeah. Same thing with the Shakespeare. If you start reading his literature in his own original English language, you cannot understand thoroughly, because we are now brought up in a different times. We don't have the same vocabulary that he had, and the way he wrote the language, same language, English is called at that time as well, but his way of writing was different for that time, and he was like a scholar of that time. So असल में अरविंदो की मेरे पास गीता है, उसमें इंग्लिश की है, वो इतनी क्लिष्ट है कि एक सेंटेंस पूरे पेज का है. One sentence is one page. Oh my God, that's very hard. So it's very hard to understand. So I gave up. I couldn't do it. Yeah. चलिए, तो ये इसके बारे में है, और इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो, then you will have to go to the Srimad Bhagavatam, Canto 5. Will have a greater description about these time scales and how it came about, what is the history behind it, and all that stuff is all there. So it's a lot of reading to be done. Deepak ji, this Brahma Samhita must be online. It is online. You can find it, Brahma Samhita. Yeah. If it's small book, one can download it. Yeah, I think so. PDF you can download and read it. Yeah. But that version written by Bhakti Siddhanta Maharaj, that's the one you have to see, because that is what is part of the ISKCON syllabus. If they are teaching Brahma Samhita, they want you to read that one. आपके पास है? आपके पास है? हाँ जी, मेरे पास है ब्रह्म संहिता. I want to borrow it first. यहीं पर पड़ी होगी. Yeah. जब मिल जाए तो मुझे I want to hear. ठीक है. Yeah. borrow करूँ. Yeah. चलिए, यतेंद्र जी तो अभी तक आए नहीं. Is putting pressure on me. You're doing great. You're doing very well. चलो. ISKCON की है? ISKCON की. Yeah. हाँ. इसमें मैंने देखा है ISKCON Desire Tree. Yes, Desire Tree has most of the stuff. But इसमें पहले तो it's given like maybe in Sanskrit. Yeah. So English
लिखी हुई है, and then there is a translation. Yes, exactly. Yeah. It's not verse by verse for Sari Sanskrit mein, and later on is the Later on translation. translation. Okay. Yeah. Yeah. Yeah, that might be it, but it's not very big book. It's a very, Yeah, because it's a prayer that Brahma ji is doing prayers in his bhavna, and he is just kind of laying out the scene of Goloka Vrindavan, how it is over there, you know. So There's a translation as well, if it's the same one, I guess. yeah, there is translation, and it starts, I mean, there is, and at the end I have heard about this Govindam Adi Purusham Purusham Tamham Bhajami. Bhajami. Yeah. He Yeah, it starts is with in there. It's Yeah. each paragraph, it's at the end of the paragraph, it Yes, says Govindam exactly. Yes. is the So Brahmaji is doing this prayer, and yeah, it's been sung by many artists. Yeah. का भी भाष्य है, उनका भाष्य बहुत Mhm. Tam aham bhajami. Yeah. Bhajami. Yeah, you've heard that? Yes. Yes, I have heard it, and this is, I mean, एक अमेरिकन का गाया हुआ है, Beatles, Yeah. John Harrison, Harrison. George Harrison, George Harrison. John Yeah. Harrison. John Harrison, yeah, maybe. Yeah. Yeah. George I said George George Harrison. Right. Harrison, yeah. He did it for the Radha Krishna temple in London, Yeah. Yes, called it Govinda. yeah. Yeah. And you find it on YouTube. I have heard it, you know. Now, there are so many YouTube videos on that. Yeah. Well, we'll have to open a school. Deepak ji, Honey? let's open a school. School for what? All of us should be going back to that school. Okay. Yeah. Thank you. Okay. So See, one of the things is if it's very complicated, most people will not be able to even start on this, let alone understand it. So it has to be soft. It has to be understandable for people like me, you know, who does not know a lot of things, but so it should be, you should be able to learn something out of that rather than this vocabulary. I mean, let's say I can read it, but by the time I finish reading it, I've forgotten the first line. yeah. So you need something which you can really embrace it. Yeah. Yeah, I think his guru used those big words to explain the resplendent of that location, that planet, or that region of the creation, because that's not part of the material creation, that's a spiritual creation. So everything is different. We are not used to using those words over here. So he purposely put those words, mix of so many English words, like big words, just to differentiate from the material creation. So that's what my understanding is, why he did this. So you can mark the difference between material and spiritual, but at the same time you try and understand in the material sense what it could be like closer to what it could be in material world. But you only have to go experience that to understand what it is. Otherwise, जैसे यतेंद्र जी कहते हैं, बातें तो बहुत कर लो, जब एक्सपीरियंस नहीं किया तो फिर बातें करने से क्या फायदा है? We all engage in talking. Yeah. Surrender, I can make it as simple can be. How about this? Be good, do good, and stay good. Yeah. That's a great mantra. Simple enough. My mantra.
Yeah, My good. mantra. Yeah. Be good, stay good, Good. And be be good, do good, and stay good. Yeah. Simple. Yeah. And all will be Sort good in itself the out. end. Yeah. Sort itself out. Yeah. No, Or indeed, sort I- itself Oh, out. Yeah. Yeah. I've That's learned Yeah. so much. Yeah. That's Thank your you for own listening to me. transformation, actually. That's Yes. you can transform yourself by doing this. It's your own transformation. That's But I think to be spiritual, you have to do certain things. like shave your head off. And being Mundu. spiritual, like as the No, I'm not. Vimala, yeah, just joking. no, I didn't even get it what you said. No, Oh, he I- was saying shave your head off like me. like him. Oh, Deepak. I mean, it's a mockery of it. If you say that, if they have decided to do, it's fine. If you do not want to do it, you don't have to. No, no, I withdraw. I just joked. I said, typical So- saying of this thing, this guy's become his son. And the first thing is, he's got this certain clothes, and I mean, there's a certain dress code and so on. I was just saying, generally, a lot of people adapt that, but without really any of understandings in that context. I'm not joking in this. The reality is this way: to dress up like a cricketer and know nothing about the cricket. It's like that. That's the Mhm. hollowness. I was saying that part of it when I say shave your head off. This is a typical saying. "Ye sant ban raha hai," so it changes. In that context, I meant that. Yeah, that was a joke. But Anyways. not belittling anything. Nobody belittling. I'm just saying No. that's when you say make a change. Change has to be internal. You said first thing very nicely. You have to change before you Yeah. can. Okay, देखिए, let ऐसा you have to clean your slate. सब चीज हटा दो. Clean slate. That's the important thing to go to that stage. clean सबको हटा slate. दो. Okay. That is a Okay. very I good think stage. Vimla ji still want to say. Yeah, I something. think interrupted her. Let her say. we interrupted Bimla Exhausted. ji's thoughts. Yes. So hope Please she go ahead. remembers I what she was apologize. saying. No, the getting to the feeling of spiritualism or being spiritual, obviously you have to do something different. I mean, as you follow, I mean, you must have seen ISKCON, how they have done, what their thing is. But Nam, Jap and Simran of God and, doing things toward the God, that's what I call it. You are advancing yourself to spiritualism. Mhm. Because leaving the material activities and going towards God, Bhagwan, Paramatma, for the three things we know what, and who stays in us, in our soul. So, dhire, if you try to know about it, more and more, that what exactly spiritualism is, you get drawn to the God. Yes. That's what I mean, spiritualism. Mhm. As otherwise, I mean, Jairam, Jayji said, this is only, I mean, one always tries to be good to others and try to be good to yourself. That's the first thing, you should be good to yourself. Mhm. If you love yourself, you are always good to yourself. And otherwise, trying to be, doing good, being good and everything. And this is only, it's a preparation towards spiritualism. Right. That's what, as Omji said, clean slate. Mhm. Clean slate tab hogi agar we try to purify ourselves. Mhm. So ठीक है. these are the steps. चलो गुड है. आप तो Oh, 12 but माला कर रहे हैं. But the I've- main problem is comes when nobody agrees what is good, what is spiritualism, what is going towards God. Nobody agrees. No, I think no. I object that because माफ कीजिएगा कि people because
everybody believes that there is some power which is Bhagwan, which is creating, we're doing it without their knowing it. So it is happening. No, people believe, actually speaking, they are, I mean, all religions believe there's some supreme power which is guiding the whole universe. और अपने गीता में और ब्रह्म सूत्र में हमें आया कि हृदय जो हृदय रूपी गुफा में भगवान बैठे हैं, and he is waiting for you. He is with you with every instant. All you have to do is to just recognize and surrender, to just feel it. भगवान का अनुभव करना है. No, I'm not saying that Bhagwan is not there. I didn't say that. मैं ये कह रहा हूँ कि जो गुडनेस की, जैसा कि पहले दीपक जी ने कहा, जहां तक गुडनेस का सवाल है, you have to experience it, and different people have different idea of goodness. I guarantee you. Yes, yeah. I was thinking about it, but I thought better not to open that can of worms, because then we get into bigger discussion. So I left it. That is because it's hard to know fundamentals. Yeah. Yeah, and even if you think you know, that's not enough. Yeah. It is to experience. Yeah. That's why our whole dharma is based on experience. You can improve your understanding by discussing, by arguing, and so on. Yeah, exactly. But असल में nobody दीपक आगे के 3-4 श्लोक बहुत अच्छे हैं. ठीक तो है, उनको चलो उनको कर लेते हैं, तो then we will give it away 20 तक round. देखते हैं कितना टाइम है. अभी 4:13 हो गए. चलिए 18th श्लोक. अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वः प्रभवन्तः यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवायक्तसंज्ञके. At the beginning of Brahma's day, all living entities become manifest from the unmanifest state. And thereafter, when the night falls, they are merged into the unmanifest again. ये तो बहुत सिंपल है. Let us go बहुत again. सिंपल है. तो इसके ऊपर तो बिल्कुल भी कोई परपोर्ट भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं, जस्ट ट्रांसलेशन ही है. unmanifest state. So इससे अगला पढ़ते हैं. भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे. Again and again, when Brahma's day arrives, all living entities come into being, and with the arrival of Brahma's night, they are helplessly annihilated. ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. यानी कि annihilated के बाद जो मैं देख रहा था महत्त्व के बारे कहाँ पर बताया है, सगले में बताया हुआ शायद. सो श्लोक नंबर 20. परस्तस्मातु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. Yet there is another unmanifest nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. Okay. So that is a little. एंड स्टिल कि वही चीज है, वही परमात्मा है, वही एक स्थान है, उसमें सब लय हो जाते हैं, उससे आया करते हैं. जैसे कि
आत्मा के बारे में बताते ना, what we actually are, beginningless, you know, कभी manifest ही नहीं हुए तो then it's called unmanifested. So that eternal transcendental abode is also like unmanifested nature. इसीलिए उसको बोलते हैं, ये लाइक परा परा बोलते हैं, परा उसको अव्यक्त कहते हैं, अव्यक्त, अव्यक्त Priti, para prakriti and परा apara प्रकृति बोलते हैं ना उसको, परा प्रकृति. prakriti and apara prakriti. Yeah. Acha, isme, can anyone tell me? हाँ. I have one question. Actually, it's annihilate hota hai. That means this thing, the whole parle aa jati hai, and there is nothing. Everything is unmanifested, right? Or jaise hum. I mean, I have this question since long time, but abhi tak mujhe answer nahi mila. Ke all these, the soul is eternal. It never dies, it never burns, it never washed away, nothing happens to it. During this time, when there is annihilation takes place, and then there is rebirth and all, where do these all souls go? Yeah. So there is a region or state called Mahat Tattva. Okay, Mahat Tattva. That is where all the souls which are bound by some desires, etc. That's why we call them Jivatmas, like us, you know, Jivatmas with some desires which are binding us. That's why. Otherwise, we are free souls, even as it is now. Let's just for a moment we imagine no desires, nothing, don't want anything, everything. I am all pervading. Imagine करके देखिए तो ये यतेंद्र जी कह रहे हैं ना, imagine, and then meditate, and then you will get that to that state, and then you will be out of this Jivatma stage, and you will be at the Atma stage, and then you are already part of the Paramatma, but then you will be like in a pure state, and then there is no mind, no intelligence, nothing required. It has everything of its own, and it goes on with full bliss, and that's what is explained, you know. ईशावास मेडिटेशन का कहा है ना आपने, सॉरी मेडिटेशन का कहा है ना, that is the lab within which you can experience this. I mean, that's the simplest way I can put it. When you meditate, you already transcended to varying degree, depend each of us, the gravity of senses, and you're able to do, and then you experience a little bit of bliss, even for a thousandth of a second. But that is why you want to continue going back to the meditation. ईशावास उपनिषद के अंदर, सॉरी, ईशावास उपनिषद के अंदर जो अंतिम श्लोक है 12वां श्लोक, उसमें आया है कि देखिए कि जब अग्नि वो जीव प्रार्थना करता है अग्नि से कि देखिए मैंने शुभ कर्म किए हैं और मुझे उस पास से ले चलो जहां मुझे भगवान के दर्शन हो, तो वो भगवान के दर्शन कर लेता है। बोला भगवान मैं आपको देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं वही हूँ जो आप, मैं देख रहा हूँ कि आप वही जो आप है, मैं ही हूँ। तो वो स्टेज है। ठीक है, हाँ जी विमला जी। मेरा क्वेश्चन डिफरेंट था। हाँ जी, हाँ जी। My question was like you have read those shlok पहले, all these calculations of Brahma's day and Brahma's night. Brahma's day is so long as we have seen, and there is, you know, life all through. There is life. When there is Brahma's night, there is no life at all.
That's what annihilation is, all during all that period. Mhm. और जितना ब्रह्मा का डे होता है is the same is the Brahma's night. That means so long. Yeah. In that period, nothing exists. Mhm. But जो जीव थे, Hmm. there was life. They had soul. Hmm. उस पीरियड के दौरान सोल कहाँ होती है? वही तो Because महत्व तत्व में महत्व तत्व it महत्व तत्व remains- में एकदम शांत अवस्था में रहती है. जैसे let's say you have all kinds of fruits and vegetables here, right? And you got some seeds from it, and you storing the seeds. Okay, store the seeds for a long time. They're in good condition, in in good environment, climate controlled, whatever condition, which they are doing that, by the way, in somewhere in the north. वो बनाई उन्होंने पूरी स्टोरेज फैसिलिटी उसकी बहुत ठंडी जगह पे, तो उसको रख रहे हैं वहां पर. एंड those seeds, anytime the annihilation takes place, and somebody comes back after a very long time, take the seeds from those labs and grows it, they start growing. So that is what happens with these जीवात्माs, with all their, because all these, जैसे अभी सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि वो उन्होंने सीड डाल दिया हमारे अंदर, तो वो it germinates, is growing. Same thing with the our sanskaras and all those karmas, that's seeds डले हुए हैं, and they are growing, and they're flourishing, then reaping the rewards of fruits or whatever coming out. So that's how the system keeps on working. Mahat Tattva is the place where it's stored. एक ऐसा है कि जो यहाँ पर जो कैलिफोर्निया में जो 2000 वर्ष के भी 2000 years old, तो उनका जो है they can germinate those still. So you can see in life कि जो हमारे लिए 2000 वर्ष, तो for a human life 2000 years is a long time. Yeah. You can see that the things which are 2000 years old can germinate. So the capacity, वो विलीन, उसके अंदर सारे तत्व उसमें भरे हुए हैं, but जब when the right conditions come, then they grow again. Exactly. चलिए बिमला जी आगे कुछ कहना? हाँ, एक चीज और है, वो ये है, I just heard, I mean, read करने का तो इतना patience नहीं है, कि there are 3 पुरुष अवतारस, वो तो सबको पता है. पुरुष अवतारस और the विष्णु के हैं, क्षीरोदाक्षाई विष्णु and गर्भोदाक्षाई विष्णु, and first है कारणोदाक्षाई विष्णु. Yes. कारणोदाक्षाई विष्णु. अब जो गर्भोदाक्षाई विष्णु है, that's what I heard. Everything comes from the stomach of Vishnu, and Brahma is born from the navel of Garbhodakshai Vishnu. Always, because he dies and he takes birth, so he has like 5 तत्व की उसकी body है, which can so everything goes into Garbhodakshai Vishnu. So I mean, all beings or all the souls, they go into the stomach of Garbhodakshai Vishnu. Yeah. ये मैंने सुना है, तो I don't know, आपने भी सुना होगा. Yeah. So there is that function, but I mean, after. That's what that means. They stay there. Every soul stays there. Yeah. So that function that happens after the 100 100 days and nights of Brahma time. So that's a very, very long time. Okay. But that function is bound to happen in the end. Just like over here in material existence,
you could see the black holes. They just gobble up everything, and then maybe it's churned out and then throws it out. The same matter ko squash karke, then it throws it out somewhere else. Who knows? They haven't come to that yet. The scientists, all they know is it's gobbling up stuff and making kitna bada material chota sa karke na very heavy karke usko chhod. That's their equations is telling them right now. But I don't know why I went there. So यतेंद्र जी ने कहना आप तो कैसी कथा कर रहे हो, आप तो घुमा फिरा के इधर से उधर ब्लैक होल में ले जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? देखिए ऐसा है, एक गॉड पार्टिकल है. Now they have in Switzerland, they have found that God particle, Yeah. but for a very, the instant is only for a print, nothing else. Yeah. So far, just for our Acharya ji is here now. So how many marks do I get so far? 200. What? No, out of 10. No, we give you 200. जितेंद्र जी बहुत अच्छा किया है यहाँ ने. Oh God. ये जो पार्टिकल की बात करते हैं ना आप, जरा मैं इसके ऊपर, व्हेन यू टॉक अबाउट पार्टिकल, ओके, आपके माइंड में क्या पिक्चर आती है? ये तो आती है कि पार्टिकल मतलब ये है कि बहुत छोटी सी particle which you can see, but they are very, very, very small particles which you cannot. maybe small, even if you cannot see, okay, still the very small. So very small, it looks like a very, very small, like a ball. जो गेंद होती ना, वही तो कल्पना करेंगे जब आप पार्टिकल की. असल में ये बात ये है कि देखिए अंत में उसी पार्टिकल से एवरीथिंग ग्रोस. देखिए फर्स्ट लेट्स स्टेट द पॉइंट. जो मेरा सवाल है, बताइए, आपके दिमाग में आपको दिख नहीं रहा है लेकिन बहुत छोटा है, लेकिन आपकी पिक्चर, कैसी पिक्चर आ रही है आपके दिमाग में? Like a dot. Yes, a dot. Dot, yeah. The dot क्या? Dot is a 2-dimensional, okay? Particle is 3-dimensional. अच्छा. So, अगर आप इसको छोटा छोटा करते जाएं, then it will be like a little ball, okay? गेंद की तरह सबसे छोटी जितनी गेंद हो सकती है वो है. Okay, round, yeah. ना? अच्छा, आप देखिए गेंद की क्या क्वालिटी होती है. अगर आप गेंद को दीवार पे मारें तो वो टकरा के लौट आएगी ना? Bounce back. हाँ, bounce back, okay? It will always do like that. लेकिन जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जस्ट लाइक देख लीजिए न्यूट्रॉन को, ओके, तो कुछ मैटर्स पे अगर आप उसको स्ट्राइक करें तो वो टकरा के लौट आएगा. कुछ मैटर्स पे वो उसके भीतर जाके खो जाएगा. अच्छा. हाँ, और कुछ मैटर में वो आर पार निकल जाएगा. अच्छा. क्योंकि आई वाज यूजिंग दिस एवरी डे व्हेन आई वाज वर्किंग. जो क्योंकि हमारी न्यूक्लियर इंडस्ट्री में जो न्यूट्रॉन है, दैट इज द मनी इन द बैंक, ओके. वो हम नहीं चाहते हैं कोई एक भी न्यूट्रॉन खो जाए. अच्छा. अब वो तो जब उसको हम चाहते हैं कि वो खोए नहीं, तो उसको ऐसा मटेरियल लगाते हैं जैसे बेरिलियम, ओके. बेरिलियम पे वो टकरा के लौट आएगा. हैफनियम में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जर्कोनियम में वो आर पार चला जाएगा. अच्छा, तो कैसा पार्टिकल है हमारी समझ, ये यू कैन नॉट विजुअलाइज. तो उसका भेद खत्म हो जाता है कि ये पार्टिकल है कि वेव है. डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांस, इट एक्ट्स लाइक ए पार्टिकल एंड इट एक्ट्स लाइक ए वेव. असल में साइंस न्यूट्रिनो है ना, Science class. It comes from the black holes, and it can go through everything. Going through our body, through Earth, even the whole universe they are going through. They are so small, and that God particle even is smaller than that. But these things, without stopping, they have the elliptical path and they keeps on moving. Then, I mean, you all know. The curiosity of scientists is that they want to just say, how this universe is constituted. What is the smallest, what is the fundamental small thing which has so much, what you call, so much power and urja, that it sustains the
whole universe. या तो ये जितेंद्र जी को ये बता दूं कि हमने ये श्लोक नंबर 20 तक किया है, हम लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। सो उसी में काफी हम लोग डिस्कशंस में उलझ गए और उलझ नहीं गए, काइंड ऑफ डिस्कशंस होती रही हैं। 20 कौन सा है श्लोक, मुझे याद नहीं ठीक से। हाँ, क्या तो 20th वाला में परस्तस्मातु वाला, हाँ, भावो। yet there is another unmanifest nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. So ये श्लोक था। तो इसके बाद फिर विमला जी का क्वेश्चन था कि जब सब ब्रह्मा जी का वो समय खत्म हो जाता है, तो उसके बाद फिर जब सब एनाइलेटेड हो जाते हैं, इससे पहले श्लोक में था सब एनाइलेटेड हो जाता है, तो वो कहते हैं फिर ये जो हम आत्माएं हैं या जीवात्माएं हैं, ये कहाँ पर जाती हैं, कहाँ पर चले जाती हैं। तो मैंने वो बताया कि जब मैंने पढ़ा हुआ है महत्व तत्व में वो स्थिर रहती हैं, वहां पर जाके रहती हैं, और उसके बाद फिर जैसे बीज रूप के तौर पे उनको फिर दोबारा से भेज दिया जाता है जिस भी सृष्टि में उनकी डिजायर्स के हिसाब से, जो जहां भी है, तो जब दोबारा से क्रिएशन होती है, तो दैट्स द सिस्टम। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने बताया। ये 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, अगर आप देखें तो उसमें है मम योनिर महत ब्रह्म तस्मन घर्म दधाद्वयम्। या मेरा ख्याल वही श्लोक खुल गया। हाँ, 14वें अध्याय का 3रा श्लोक आपने बताया। या मम योनिर्महदम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हाँ, तो उसमें इसकी ट्रांसलेशन है द टोटल मटेरियल सब्सटेंस कॉल्ड ब्रह्म is the source of birth, and it is that Brahma that I impregnate, making possible the births of all living beings, O son of Bharata. उससे अगले में it should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed giving father. So basically it's all down to one supreme being, which is Lord Krishna, according to Bhagavad Gita, and Srimad Bhagavatam as well. Lord कैसे भगवान, मुझे भगवान कहना पड़ेगा, because we are not in House of Lords as Rajji says. भगवान कृष्ण। अच्छा, मैं एतेन जी, ये दीपक जी ने बहुत अच्छा लीड किया, एंड आई थिंक ये बड़ी प्रशंसा के पात्र हैं। आपके संग रहने में इन्होंने बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छा पता। आपसे गुड लीडर। आप सभी लोग बिल्कुल लीड करने में एक बराबर हैं, मतलब एवरीबॉडी कैन लीड। आई एम कॉन्फिडेंट। और फिर आपको, मतलब वी आर सो ग्लैड कि आप आज आपके दर्शन हुए, बहुत खुशी की बात है। और सब आपका स्नेह है और भगवान की कृपा है। भगवान। तो दीपक जी तो खैर, I really been dreaming of this day for a long time, for almost a month now. आज शुभ दिन भी है ना, आज होलिका है, क्या होली आज का दिन, शाम को करेंगे। पूर्णिमा है। अच्छा, महाप्रभु का अपीयरेंस डे है। इसका चैतन्य महाप्रभु। अच्छा। वाह, दैट्स नाइस। दीपक जी, आप तू दया दीन करके फिर होली गाइएगा। तू दयालु दीन दान है भिखारी। हाँ, तो
We have it somewhere. Dodra D3. चलिए भजन कर लेते हैं। हाँ जी, भजन का टाइम हो गया। 110. तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की हो, प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं, आरती हर तो सो, तू दयालु दीन हो, ब्रह्म तू है जीव तू, ब्रह्म तू है जीव तू है, ठाकुर हो चेरो, ब्रह्म तू हो जीव तू है, ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा, सब विधि ही तू मेरो, तू दयालु दीन हो, तो ही मोहि नाते अनेक, तो ही मोहि नाते अनेक, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, शरण शरण आवे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी,
बहुत सुंदर। 442 हो गए। हाँ, अभी एक और चल सकता है। ओके, एक होली गा दीजिएगा। होली का मैंने कोई निकाला नहीं हुआ। यही दिखता है मुझे तो। होली खेले रघुवीरा। गुड। करता हूँ ट्राई थोड़ा सा। अरे ताल से ताल मिले मोरे बबुआ, बाजे ढोल मृदंग, मन से मन का मेल जो हो तो रंग से मिल जाए रंग। ओ होली खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। हाँ हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, भई महरन में भीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी तनिक शर्म नहीं आए, देखो नहीं अपनी उमरिया बर्द में, होरी खेले रघुवीरा। ओ 60 बरस में इश्क लड़ाए, 60 बरस में इश्क लड़ाए, मुकड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया। वीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। हाँ हिल मिल आवे लोग लुगाई, भई महलन में हीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। आए अब के फाग मोसे खेलो ना होरी, तेरी शपथ मैं उमरिया की थोरी। देखे है ऊपर से झांके नहीं अंदर सजनिया,
उम्र चढ़ी है दिल तो जवां है, उम्र चढ़ी है भैया दिल तो जवां है, बाहों में भर के मुझ जरा छनका दे सजनिया, छनका दे सजनिया। से कहे कबीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघु, ओ होरी खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, भई महरन में वीरा, अवध में होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा, अवध में होरी खेले रघुवीरा, 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 होरी खेले रघुवीरा, अवध में होरी खेले रघुवीरा। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। हाँ जी। एक है छोटी सी। आज खेलो शाम संग होरी, आज खेलो शाम संग होरी, आई आज खेलो शाम संग होरी, आज खेलो शाम संग होरी। ऐसे वेरी नाइस। अच्छा, अब मैं आपसे नमस्कार करना चाहता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, तो हम लोग 10 मिनट मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। आप अपनी हेल्थ का, सेहत का ध्यान रखिए, और हम आपको हर बार देखना चाहते हैं, आपकी कंपनी चाहते हैं, तो I will do that. वी विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. Thanks. नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। चलिए हम लोग चलिए। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं, फिर यतेंद्र जी हमें मेडिटेशन की तरफ शुरू करेंगे।